एक जर्नी, I'll show you a journey of last 20 years and आने वाले 20 साल. That's it. As a student, as a employee, as an entrepreneur, how we have gone through. आज से 20-25 साल पहले क्या होता था जब suppose my father used to go for doing a job. He was an employee. उनकी लाइफ कहाँ थी? 2 पंच 1 लंच. सुबह गए, पंच किया, फैक्ट्री में इन, लंच किया, पंच आउट, बाहर. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम पीपल यूज्ड टू हायर एम्प्लॉइज. उसके बाद क्या हुआ? और 20 साल से जब हम आगे बढ़े, 10 साल पे आए, पीपल स्टार्टेड हायरिंग मैनेजर्स. पीपल सेड एब्सोल्युटली ऑलराइट, ये बिजनेस मेरा है, मैं इस बिजनेस को चलाने के लिए आई विल गिव दिस बिजनेस टू समवन एल्स एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट बिजनेस. पीपल स्टार्टेड हायरिंग मैनेजर्स. करेक्ट? बिल्कुल ठीक है. अब क्या हो रहा है? अब बिजनेस किसी ने लगाया, मैनेज कोई और कर रहा है, लेकिन पीपल वांट टू फाइंड आउट समवन हु कैन लीड द बिजनेस, लीड द ग्रोथ. सो व्हाट पीपल आर हायरिंग नाउ? हाँ, जोर की. करेक्ट. सो वी आर हायरिंग लीडर्स. सो देयर इज अ जर्नी इन डिमांड व्हिच हैज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम एम्प्लॉय टू मैनेजर टू लीडर. करेक्ट. अब देखते हैं इंडस्ट्री कहां से कहां गई है. ठीक है. सो इंडस्ट्री की जर्नी दिखाता हूं. सो इंडस्ट्री स्टार्टेड विद इंडस्ट्री 1.0. करेक्ट. उससे पहले देयर वाज नथिंग मैकेनिकल. इंडस्ट्री 1.0 में देयर वाज सम मैकेनिकल स्टफ व्हिच वाज इंट्रोड्यूस्ड, कुछ टूल यूज किए गए, कुछ मशीनरी यूज की गई. दैट्स हाउ थिंग्स वर्कड आउट. एंड आई एम कीपिंग इट वेरी ब्रीफ. इट वाज लेट 18th सेंचुरी. मशीनें आनी शुरू हुई. जो लोग हाथ से काम करते थे वो अब मशीनों पर काम करने लगे. करेक्ट. इंडस्ट्री 2.0 आया, इलेक्ट्रिकल वाज इंट्रोड्यूस्ड. सो आपकी electricity was introduced, faster machines were introduced. Absolutely. Then in third, industry 3.0, what thing came into the picture was electronics. आपके chip based systems, electronic machines, all that came into the picture. And last, which is the recent one, is called industry 4.0. What is that? जहाँ पे आपका internet of things, artificial intelligence, data analytics, ये सब क्या है? अब ये एक चीज है. इंडस्ट्री 5.0 इज ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड, विच मीन्स मशीन्स एंड ह्यूमंस विल कोएग्जिस्ट. सो हो सकता है आपको साथ बैठ के मेरे पैनल पे एक रोबोट हो और एक मैं हूं. दैट इज द टाइम टू कम. सो इंडस्ट्री की जर्नी कहां है? एक बेसिक हैंड बेस्ड टूल से स्टार्ट करके दे हैव कम बैक टू अ जर्नी जहां पे मशीन्स विल कोएग्जिस्ट विद द पीपल. अब आप जो अगली जनरेशन हो, यू आर गोइंग टू फेस दिस पिक्यूलियर चैलेंज कि आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बीट करना है. अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चाम क्या है? आज से 10 साल पहले हमें खाना ऑर्डर करना होता था, हम क्या करते थे? रेस्टोरेंट के मेन्यूज, रेस्टोरेंट के नंबर. करेक्ट. आज क्या है? जोमैटो और फूड पांडा तो गया, उबर ईट्स भी गया, जोमैटो ने टेक ओवर कर लिया. सो देयर वर मेनी. इफ यू रिमेंबर, फूड पांडा होता था, उबर ईट्स होता था. दे वर टेकन ओवर बाय बिग प्लेयर्स. व्हाट इज हैपनिंग इज देयर इज वन पर्सन हु इज क्रिएटिंग अ मोनोपोली और टू पर्सन हु आर जॉइंटली कंट्रोलिंग द मार्केट. अब आपको किसी रेस्टोरेंट का नंबर नहीं पता है. यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस. ओनली यू हैव टू डू इज जस्ट पिक अप योर फोन, go to the app, order what you want, and it will be delivered to your house. Correct? अब second scenario देखिए. Because of this, you are totally dependent on that particular phone, that particular app, that particular delivery system. And if you want to order food, you can try it. There will be a dynamic pricing concept. आप और आपके friend साथ में order करें, pricing will be different, offers will be different. उसको 40% डिस्काउंट मिलेगा, आपको 60% मिलेगा. क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि दिस इज वेयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज कमिंग इनटू द प्ले. किसको ज्यादा यूसेज करानी है? जो ज्यादा यूसेज कर रहा है उसको सस्टेन कैसे करना है? दिस इज वेयर you have to get your learnings in place because machines are doing it better and faster. Question is that will you be able to beat artificial intelligence? हाँ या ना? Will you be able to beat artificial intelligence, AI?
नहीं? Yes, because we are the one who We have created it. Exactly. So I'll tell you what I believe is artificial intelligence is super, but it can never take over actual intelligence. This is what you have to believe. And there'll be an upgraded version of everything in life which will be available, which you have to implement next. So question is, abhi isme, if you see the topic, it's a ready for the future, right? So are you ready for the future? That is the question. So what you are supposed to do to be ready for the future? क्वेश्चन आंसर आपको पूछना था, मैं पूछ रहा हूँ, बट इट्स फाइन. क्या करना है फ्यूचर रेडी होने के लिए? अच्छा, आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताता हूँ सो दैट दिस विल एक्चुअली गिव यू अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव. सो a lady starts a beauty and makeup product company called Nykaa in her 50s, early 50s. On her 50th birthday, she resigns from a banking job, established banking job. She was a MD of a leading investment company, and she resigned and starts her beauty products, sale of beauty products called Nykaa. Name is Falguni Nair. Orders per day to start with were 4 orders per day. Today they are catering to 4 lakh orders per day. Company got listed and the market cap is 1 lakh crore. आपकी ITC की है 1 lakh crore market cap. So what I'm trying to say, what was the differentiator? What was the X factor? So today, if you read, you only in the education, a company like Byju's is planning to list overseas at a valuation of $48 billion. 48 billion कितना होता? चलो जो ये बताएगा उसको कुछ प्राइज नहीं मिल सकता, वरना लोग किधर? $48 billion. अच्छा चलो आप बच गए. हाँ जी, $48 billion कितना होता? यूज योर कैलकुलेटर्स, नो प्रॉब्लम. कितने? 4,800 crores dollars. अच्छा, वो अमिताभ बच्चन की कौन सी पिक्चर है सर? वो इतना था, दूसरा हाथ तो आया ही नहीं. यू एक्चुअली गिव द प्राइस. हाँ, आप अपने बच्चों को प्राइस दे ही देते हो. सो $73 है. मैंने तो बोला कैलकुलेटर यूज कर लो, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम क्या आएगी मैं बताता हूँ ना. इसको जीरो काउंट करने पड़ेंगे. तो भाई ने कहा मैं एक फिगर बताता हूँ, फिर दूसरी बताता हूँ, मल्टीप्लाई खुद कर लेंगे. फिर सोच ले. अब now time is over. You can't do any more calculation. ना अब नहीं हो पाएगा. अच्छा कोई बात नहीं. So imagine a number where you're struggling to calculate. Somebody created that company in 10 years. Look at the beauty of this. We may laugh at it, but somebody has created that company which is listing at that valuation. What was the X factor? X factor was tech. X factor was technology reaching people in an enormous way where physical infrastructure can not ever facilitate you. That's the X factor. अब आप बोलोगे फ्यूचर रेडी कैसे होना है, उस क्वेश्चन का आंसर करते हैं and then we can move on to question answer. And I'm telling you this out of my experience of funding startups. सारा दिन यही काम कि स्टार्टअप्स को पैसा देना है, but believe me, the ideas they are having, they all have one thing in common, which is tech, which is data analysis, which is artificial intelligence based tools. Because more you involve humans, it's going to be a costly affair. Tech is very very cheap. आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं. Today, if you have employees who know tech, you get a higher valuation for your company. So this is the market scenario, and everybody is so. You know what a unicorn is? Unicorn क्या होता? Sorry. Horse like animal who can fly. बिल्कुल ठीक. अच्छा, यूनिकॉर्न कंपनी क्या होती है? जो घोड़े पे बैठी होती है. Sorry? Awesome. So यूनिकॉर्न वो कंपनी होती है जिसकी वैल्यूएशन
$1 बिलियन पहुंच गई इंडिया। $1 बिलियन कितने करोड़ रुपए हो गए? नहीं सर, मैथ्स की क्लास नहीं है, दिस इज चीटिंग। $1 बिलियन माने कितने रुपए? कितने? 700 करोड़। फिर सोचो, 7,000 crores. So if a company achieves a valuation of 7,300 crores, considering rupee rate at 73, it's called unicorn. तो यूनिकॉर्न का मतलब यह है कि आप $1 बिलियन क्लब में एंटर कर गए, और $1 बिलियन क्लब में एंटर करने का मतलब यह है कि आपके जो 1% शेयर की वैल्यू है, दैट इज मल्टीप्लाइंग अगेन एंड अगेन. So important thing, what is important here, what I'm trying to tell you here is, in this year itself, this year only, and I'm talking about calendar year, not even financial year, that means January 21 to till date 15th of December 2021, India has got 41 unicorns. 41 companies got funded, and they all actually, a lot of companies got funded, but 41 entered the unicorn club. कुछ अच्छा लग रहा है सुन के? नहीं, कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ, अभी देखो और अच्छा लगेगा. So important thing here is, can you create a unicorn entity? Can you create a company which can enter that unicorn club? What is above unicorn? So there is something called decacorn, which is 10 times of a unicorn. That means a company which has a valuation of 75,000 crores plus. Example: Paytm, Oyo, Byju's. So these are the companies which have valuation above $10 billion, and we use them as users. So now you imagine that we are using a product, and by using it on a tech or an app, we are making that company into a unicorn club. So what will you do to be a part of that journey, to be a part of that momentum? What will you do? Last question है मेरा. Anybody? क्या करना है? चाय पीनी? फंडिंग करानी है? मैं चेक लिख देता हूँ मैडम. I can give a blank check, आप साइन कर दें. So I'll tell you, only one thing you have to do. Only one thing. You have to just upgrade your skills than others. That is as simple as that. क्योंकि प्रॉब्लम क्या हो रही है, मैं आपको बताता हूँ. We are getting degrees, we are not getting skill. That's the bigger problem we are facing in the market. When we go and hire, believe me, people, all of them, so when all of you pass out, you have that same degree. What will be that differentiator which will create an impact about you? That is something that's called skill. Are you preparing for the future by enrolling yourself to something into data analytics? Or you have a course, right? You have a data lab, analytics lab. So how many of us have thought about it, that along with my course, I should, be prepared for the future? I would like to do that. I am planning to do that. What more important is, you are the next generation. You have to take up the point and start upgrading your skills from right now. That is very important. So I think from a place perspective, you are at a right place. I am a student of Lloyd, so I can guarantee you that I have seen lot of positive developments, which includes a startup incubation center, which includes a data analytics lab, which includes courses on the future-oriented technology. So please take an advantage of it. Try to, get maximum skill upgrade for yourself so that you are ready for the future. If you will not polish and sharpen your actual intelligence, you will be beaten by the artificial intelligence. Right? Chai pini? Any questions? Any questions? किसी को फंडिंग चाहिए? मैम आपको मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ. देखिए, मैंने बोला किसी को फंडिंग चाहिए. सी द डिफरेंशियल. यहाँ पे कम से कम 200-250 लोग बैठे हैं. Just nobody even bothered to raise the hand. I didn't ask a question. I just asked फंडिंग चाहिए. So that is something that is very important. जब सामने से आके अपॉर्चुनिटी पूछे ना क्या करना, खड़े तो हो जाओ, बोलो तो सही कि हाँ. आप तो टाइम निकल गया, फंडिंग खत्म हो गई, मैंने बंदा को दे दिया चेक, मैडम आप बांध दें. So actually speaking, realize this. आपको पता 90% कंपटीशन ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाता है, क्योंकि जैसे ही कोई ऐसा सवाल पूछता है ना, तो सारे साथ वाले को देखने लग जाते हैं, भाई तू गया. And this is where you eliminate competition by yourself. Just raise the hand. I am the first one. I want. This is when ma'am said she wants it. Ma'am said, imagine, ma'am is saying I want the funding. अच्छा, उन्होंने सबको बोल दिया, सबको चाहिए. आपको 1 लाख बांटना, वो छोड़ो, सबको 1000 दे दो.
So what I'm saying is, please take the opportunity. Moment it arrives, just be there to grab it. This will define what you are. Right? Sir, मेरे लिए भी question है? हाँ. Yes. So perfect. So any questions, guys? Thank you so much, and wish you all the best.